everyone, welcome back to your own Dizzy Talk and I'm back with another video जिसके बारे में हमने पहले बात की थी and today we're going to talk about how to give an autistic therapy. बहुत सारे आपने videos देखे होंगे that how to give therapy like this, like that, but most of the times कुछ proof भी कर देते हैं but कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Maybe our approach is wrong, so that is why sometimes we need to change our approaches according to the patient. See, you guys need to know before that, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि what are the 6 early signs of autism, then you need to go and watch that and the link is in my description and please do subscribe the channel before so yeah, let's start with how we give an autistic child a therapy. थेरेपी नॉट ओनली मीन्स कि मतलब आप एक सिर्फ उनसे बात कर रहे हो या फिर सिर्फ उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स आपने उनको डेवलप करने हैं और समथिंग लाइक दैट. थेरेपी मीन्स फॉर एन ऑटिस्टिक चाइल्ड इज़ अ कंप्लीट केयर ट्रेनिंग सिस्टम विच सिंपली मीन्स कि आपको बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके साथ आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द स्पेशल नीड्स ऑफ माई चाइल्ड, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई नीड टू टेक केयर ऑफ थ्रू आउट द डे. सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पेरेंट्स, क्या होता है कि अगर आप इफ़ यू लेटिंग द चाइल्ड गो फॉर अ थेरेपी देन you need to know that only getting the therapy at a center or something wherever you're taking the child isn't enough. You have to take care of all the things throughout their day. So first of all we need to assess what are the different needs, special needs of the child. हर एक ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट होता है एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज डू, राइट. पीपल थिंक दैट ऑटिज्म है तो दीज इज ऑल थिंग्स दे नो एंड दे हैव टू टैकल इट द वे लाइक एवरी अदर पर्सन डज, बट दैट्स नॉट द वे. फॉर एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड ही और शी इज़ यूनिक इन देयर ओन वे. दैट इज़ वाई उनको एसेस करना कि उनके क्या पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल what are their high and low points and then letting them know that we know that we are here to talk to them. For the guardians, for the parents, आप उनको बताओ कि like we are here for you, we are listening to you and whatsoever the things that you are incapable of doing, we are here to support you. So that's what matters. अगर आप एक early stages के autistic child के साथ कर रहे हो then you need to form a connection with them and a specific connection बनाने से क्या होता है that they know that whatever they need they can rely upon you and they don't have to make some tantrums, they don't have to be hyperactive or something like that. So that is why we need to assess few simple points for knowing कि हम उनको home based training program कैसे दे सकते हैं. Fine. Also you have to keep a check on their high and low points. अब हाई एंड लो पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई एंड लो पॉइंट्स मीन्स हाई पॉइंट इज़ समथिंग जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है एंड लो पॉइंट इज़ समथिंग विच दे आर नॉर्मल विद. सम सिचुएशंस विच दे आर नॉर्मल विद एंड हाई पॉइंट्स आर समथिंग विच दे माइट नॉट बी दैट नॉर्मल विद एंड यू नीड टू फिगर देम आउट. अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है कि ये चीज़ से बच्चा ट्रिगर हो रहा है या ये चीज़ से बच्चा काम हो रहा है, देन आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू काम देम डाउन वेल दे बिकम्स अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड और हाइपर एक्टिव ऑटिस्टिक चाइल्ड, whatever so and so the problem goes with. Fine. So keep a check on that. Also report the progress. Report the progress doesn't mean कि हमेशा we have to give the graph at upward stages only. There are so many instances in an autistic child's life and phases जिससे वो गुजरते हैं which we need to conquer, right, which we need to know. Sometimes it might be a sinusoidal wave or something, or sometimes it can be a plateau, एक normal curve भी हो सकता है, or sometimes it can be a down going, but that should not get your hopes down. हमें कभी भी अपनी hopes को down नहीं करना है and we always need to be there for them no matter if they are on a high point or they are on their low point. So yeah, going on with that, जब अगर एक बच्चा छोटा होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, what we need to do is we need to do something called a pre-linguistic importance. प्री-लिंग्विस्टिक स्किल्स उनमें डेवलप करना है. प्री-लिंग्विस्टिक स्किल्स में क्या क्या आएगा? आई कॉन्टैक्ट्स, देयर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, देयर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच दे नीड टू नो बिफोर नोइंग कि एक लैंग्वेज या एक एक्सप्रेसिव नेचर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो हमें डेवलप करना ज़रूरी होता है. सो गोइंग विद द एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे जो भी हम उनको करवा रहे हैं
which अगर उनका linguistics अभी नहीं आया है, speech and language नहीं आया, so we need to take care of them before going for the language part. Also, दो चीज़ें these are very very important while we take therapy for a child is that social engagement or we can say continuous level lagging. इसमें क्या होता है कि you have to continuously engage the child and interact with the child throughout their day. ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का क्या होता है, दे ऑलवेज कीप ड्रीमिंग, दे आर इन अनदर वर्ल्ड एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो. वो अपने अलग एक डिमेंशन में होते हैं, अपने एक अलग थॉट्स में होते हैं. दे ड्रीम ऑफ थिंग्स, दे कांट मेक आई कॉन्टैक्ट, दे थिंक अबाउट थिंग्स यू वोंट बी एबल टू थिंक ऑफ, राइट. सो दैट्स हाउ वी नीड टू टैकल. अगर एक उनकी कोई प्रॉब्लम है, सो वी नीड टू पिक दैट आउट एंड देन वी हैव टू थिंक कि उनसे बात करनी है. वी हैव टू इंटरेक्ट विद देम एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर वो हमारी तरफ देख रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू अस, देन वी शुड लेट देम नो दैट वी आर ऑल्सो देयर फॉर देम. सो दैट्स वाई कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. कंटिन्यूअस एंगेजमेंट मीन्स उनको बिल्कुल सोचने तक का टाइम भी नहीं देना, नॉट इवन अ सेकेंड ऑफ देम दैट दे लॉस्ट कंट्रोल. फाइन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Level lagging is continuously engaging with them with the social environment. Keep letting them know at every point whenever they are sitting free, they are doing something and all that. उनको बताते रहना that there is a social engagement, social environment apart from you. तुम्हारा एक जो एक ambient place है जहाँ पे तुम रह रहे हो, whatever you're staying in, whatever room you're in, whatever place you're in, whatever place you're being with your guardians to anywhere, right? उनको बताते रहना दैट यू आर हेयर एंड यू आर नॉट समवेयर एल्स. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेटिंग देम नो कंटिन्यूसली, बोलते रहना बार बार दैट यू आर हेयर, यू आर डूइंग दिस, अभी हम ये करने जा रहे हैं, अभी हम वैसे करने जा रहे हैं, अभी हम खाना खाएंगे. एंड एवरी लिटिल थिंग दैट दे आर डूइंग यू नीड टू डिस्क्राइब इट आउट इन द वर्ड्स. बच्चा अपने आप डायरेक्टली नहीं बोलेगा. इफ़ वी थिंक कि बच्चा अपने आप ही उस चीज़ को देख के हम उसे बताएंगे कि जस्ट 1 or 2 times, देन ही नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ. दैट्स नॉट पॉसिबल. वी नीड टू डू इट. दैट इज़ वाई वी सेइंग ना कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. सो दैट इज़ हाउ हमें कंटिन्यूसली एंगेजमेंट उसमें लानी पड़ेगी. ऑल्सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिंग्विस्टिक पार्ट एंड हियर इट गोज. सो या, linguistic skills के लिए I would simply suggest one short and sweet simple word, targeted word approach. Targeted word approach में क्या होता है, you take few targeted words जो आप उसको starting से सिखाना चाहते हो, that you want them to utter, whatever that can be, whatever. Start with simplest that they can utter easily. For example, mama, papa, dada, dadi, or pani, something which is of their need. Start with it. Targeted word therapy में we take it maximum 5 to 10 words. I'm just letting you know as an example, right? 5 to 10 words आप लो and then continuously let the patient, let the child know that you are using these words throughout the day. अगर एक ही चीज़ की it happens with the human nature, right? अगर एक ही चीज़ को हम बार बार पूरे दिन में रिपीट करते रहेंगे, it's our psychology that we used to remember it. No matter what, we see it everywhere and it's a tendency to repeat it too. So that's how happens, same with an autistic child. Keep repeating all those targeted words and use them on their own and with the child as well. उनको जब आप उनसे सोशल एंगेजमेंट, जब उनसे बात कर रहे हो, कंटिन्यूस एंगेजमेंट में उन्हें रख रहे हो, देन कीप ओवरलोडिंग द चाइल्ड विद ऑल दीज टारगेटेड वर्ड्स एंड देन यू विल बी एबल टू नो दैट दे आर गेटिंग इट, दे आर नोइंग इट. फॉर 10 to 15 times a day फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें 50 to 100 times भी अगर एक वर्ड या 2 वर्ड पूरे दिन में बोल रहे हो, इट्स मोस्ट व्हाट वी से, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो उस 50 to 100 times में से 2 to 3 times मैक्सिमम, इफ़ मिनिमम भी अगर हम ले तो वो उसे कैच करेंगे. सो दैट्स वाई टारगेटेड लेवल अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू फिगर आउट कि प्रोग्रेस क्या है, एज आई टोल्ड अर्लियर, एंड दैट्स हाउ वी कैन डू आवर थिंग्स एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक द ऑटिस्टिक चाइल्ड ग्रो. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी उसमें कोई क्वारी लग रही है, कोई भी आपको लग रहा है कि यू वोंट बी एबल टू टैकल ऑल दिस एंड ऑल दैट, आई विल टेल यू, डोंट लूज होप एंड ऑलवेज स्टे देयर, because these things take time, right? And they also need their own time. The children, they also need their own time to let you know that they are trying themselves too. So that is why we always need to have hope. And for the last more part, I'll say that
keep subscribing to my channel. Please share the video as much as you can, and please help people who need to know about all these things, and they can start their therapy at home as well. And stick to me also, and I'll come up with another video next week. Till then, bye.